guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So आज की वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं. ओके इसमें हम आगे की कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. अच्छा गाइज, मुझे बहुत सारी कुछ इश्यूज मुझे कमेंट में मुझे मिली हैं कि इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई है उसमें वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मे बी शायद ये टेक्निकल इशू हो सकता है. तो उसका मैं बाद में कुछ सॉल्यूशन करती हूँ, या तो मैं उसको फिर से बनाऊंगी या फिर मैंने नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से पढ़ लेना. ओके अभी हम आगे के पार्ट जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं. सो आज यहाँ पे हम आगे के कुछ टॉपिक्स करेंगे, ठीक है. और इसमें सारी यूनिट मतलब पूरी एक यूनिट इसमें कवर है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर आई हूँ. तो जितने भी है ना, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है. तो इमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हम इसकी सीरीज चला रहे हैं, इसकी सारी वीडियोज आ रही हैं. ओके तो इसी में हमारा एक यूनिट आती है जिसका नाम है इश्यूज इन फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चरिंग. ओके मतलब कोई भी फाइनेंशियल रिफॉर्म हम इससे पहले वाली वीडियो पढ़ा था ना, तो उसमें जो इश्यूज आते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसको कैसे रिस्ट्रक्ट करें, मतलब उसको रिस्ट्रक्ट करना है, उसको फिर से कैसे बनाना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, क्योंकि सभी को जब भी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन जरूर करते हैं. देन वी विल स्टार्ट चैलेंजेस एंड इश्यूज इन फाइनेंशियल रिफॉर्म. देन वी study assessing non-performance assets in Indian banking. Then we study previous methodologies for recovery, and then impact of gross NPA on banks bottom line. अच्छा मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, बट मुझे कमेंट में किसी का भी आंसर नहीं मिला कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई. तो मैं ही बता देती हूँ, जैसे कि हमें पता है बहुत ही इजी, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इतना छोटा सा आंसर था, लेकिन किसी ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं दिया, तो ये बहुत गलत बात है. आपको कुछ भी आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करो. ओके चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज बैकबोन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एज इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन टू मैनी हाउस होल्ड्स. या इज इट करेक्ट? यस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज बैकबोन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, राइट. फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? बैंक है. और इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है? उसकी बैकबोन है ना. तो ये तो इजी है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं इस बात को, राइट. फिर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी क्या होती है? बैंक्स, राइट. और वो क्या होते हैं? इसेंशियल होती हैं. किस चीज के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. जीडीपी में बैंक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट. नाउ उसके बाद हम पढ़ते हैं दिस इंडस्ट्री supports one of fastest growing large economies across world. So this industry must be technologically advanced, transparent, responsible and efficient. This industry से मतलब है बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है. वो हमें देखा जाता है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है इकोनॉमीज में, तो इसीलिए हम मानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ये एडवांस्ड, इसको फॉलो करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए फॉर देयर वर्क, एंड ऑल्सो इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होनी चाहिए, राइट. It's need of Indian economy to have a strong banking sector, and in Indian banking is not only about economic function of depositing and lending, but it also attached to some social functions. As we know that such as financial literacy, financial inclusion, inclusive growth and economic development, these all are the main factors of banking our Indian banking system, right. So as we know that an efficient financial sector enables smooth mobilization of money supply, increase household saving and investment, and also ensure their proper utilization in productive sectors. The financial sector constitutes commercial banking, non-banking financial institutions, investment funds, money market, insurance, pension companies, real estate, microfinance institutions, development banks, etc. So these are the main points, or these are the main sectors where our banking system works on it, right. Then financial sector reform. What is the financial sector reform? As we know, as we studied about before, as we studied about financial sector reform before, now we have to know what are the challenges and what are the reform
they have to be mean for it, right? Now financial sector reform, we already studied about it. Financial sector reform क्या होता है? Financial sector reform means reform in financial sectors, which are really means to economy and GDP growth. Okay, so the financial sector can include commercial banks, non-banking financial companies, investment funds, money market. All these are related with फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. कौन कौन से रिफॉर्म आए थे फाइनेंशियल सेक्टर में, पता है ना? फिर से पढ़ लेते हैं, चलो. एज फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी, फाइनेंशियल सेक्टर इज क्रूशियल फॉर अलोकेटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. स्टेप डन टू रिफॉर्म बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट्स, गवर्नमेंट डेब्ट्स, फॉरेन करेंसी मार्केट्स एक्सेट्रा आर रेफर्ड टू एज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. सो रीजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, क्या क्या रीजन है? सबसे पहले तो इंडिया एक्वायर्ड नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड इश्यूज एज रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल लेगेसीज. ठीक है, सबसे पहले इंडिया ने क्या करा? इंडिया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड इश्यूज एज रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल लेगेसीज. कॉलोनियल लेगेसीज का मतलब क्या है? देखो, ये ना ब्रिटिशर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा, जब ब्रिटिशर्स का राज था ना, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था उसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस थे, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज थे. बट हमने उनको धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया? उनको कम किया. अपनी बैंकिंग सिस्टम को हमने बूस्ट अप किया. अपनी बैंकिंग सिस्टम को हमने क्या किया? अपने बैंकिंग सिस्टम को हमने स्ट्रेंथनिंग किया. Okay, so both social and economic development in nation were behind. India created system of planned economy based on Mahalanobis model to achieve objective of rapid economic development. अब इसी में क्या हुआ? Midway through 1980s and beginning of 1990s, this model had already begun to reveal some of its flaws. Okay, so to promote economic growth, government adopted fiscal activism approach and significant amount of public spending were funded by significant borrowing at low interest rates. India's financial markets were hence relatively underdeveloped and weak. Fiscal activism has resulted in an annual increase in fiscal deficit. Economic was negatively impacted by inflationary tendencies and other aspects of automatic monetization of fiscal deficit policy. What do you mean by fiscal deficit policy? Please make it sure to answer this in comment box. Now, due to nationalization of banks, government now has total authority over them. समझ लो, स्टोरी समझ में आ रही है? क्या हुआ है पर देखो क्या हुआ है. सबसे पहले तुमने, अब मैं ये वाला तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था, फिर से सुनो. टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया फिस्कल एक्टिविज्म अप्रोच को. ठीक है, फिस्कल एक्टिविज्म अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले ये समझो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है. फिस्कल पॉलिसी आपने 12th में पढ़ी थी ना, है ना? उसका ही जब हम एक्टिविज्म अप्रोच लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फिस्कल एक्टिविज्म अप्रोच. एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग वर फंडेड बाय सिग्निफिकेंट बोरिंग एट लो इंटरेस्ट रेट. उसको हमने क्या किया? अमाउंट जो था ना उसको हमने जब इंटरेस्ट रेट उसका लो कर दिया. जो अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं जब उसका इंटरेस्ट रेट लो हो जाए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिस्कल एक्टिविज्म अप्रोच लगा रहे हैं, राइट? अब इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट वर हैंस रिलेटिवली अंडरडेवलप्ड एंड वीक. अब इसी वजह से क्या हुआ? इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट जो थी वो क्या हो गई? रिलेटिवली अंडरडेवलप्ड एंड वीक हो गई. उसकी वजह से क्या हुआ? फिस्कल एक्टिविज्म हैज रिजल्टेड इन एन एनुअल इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट. अब फिस्कल एक्टिविज्म की वजह से क्या रिजल्ट निकला? उसका परिणाम हुआ कि फिस्कल डेफिसिट होने लगा. इकोनॉमी वाज नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज. इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज का मतलब है कि महंगाई बहुत बढ़ गई. एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी. अब इसी की वजह से क्या हुआ? ड्यू टू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट, जब बैंक नेशनलाइज हो गए, गवर्नमेंट नाउ हैज टोटल अथॉरिटी ओवर देम. अब सारी अथॉरिटी किसके पास चली गई? गवर्नमेंट के पास चली गई. which has curtailed influence of market forces in financial sector. Before 1980s, growth rate was roughly 3.5% annually, and by middle of 1980s it had risen almost 5%. This growth rate was proving insufficient to solve economic and financial problem of country. यहाँ तक समझ में आया सभी? नेक्स्ट पॉइंट,
issue with red tape and lack of professionalism in banking industry were to blame for rise in non-performing assets. यहाँ पर क्या हुआ है कि इशू कर रहा है हमने, देखो यहाँ पे इशू विद रेड टेप एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, अगर इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो वो क्या ब्लेम करेगी, राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन से होते हैं, जो परफॉर्मिंग नहीं होते. परफॉर्मिंग एसेट तो जैसे कि हमारे शेयर्स वगैरह सारी चीजें, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग जो परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसमें फिर राइज होगा ना, है ना. देयर वर डिफिकल्टीज विद फाइनेंशियल सेक्टर्स, लैक ऑफ इफेक्टिव regulation, technologies used in financial system and its institutional structures were outdated. Now, India was dealing with several economic issues in 1991. 1991 में क्या हुआ, इंडिया किससे डील कर रही थी, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज से डील कर रही थी. several economic issues. Foreign exchange reserve of India were under stress. As a result of it, Middle East conflict and collapse of USSR, India was currently experiencing balance of payment crisis, making reform necessary. India received colonial heritage that was rife with different social and economic injustice after gaining freedom. Now, the shortcoming of planned economic development strategy, which was based on Mahalanobis model, became apparent in 1980s. Now, government increased borrowing at favorable rate to accomplish number of economic goals, but this has left India's financial system vulnerable and underdeveloped. Increased red tape and bureaucratic oversight lead to an increase in non-performing asset. Now, turbulent international events such as a war in Middle East and the fall of USSR increased pressure on foreign exchange reserve of India. Now, what are the strategies adopted for financial sector reform? So, India chose to implement financial reform gradually rather than using shock therapy. उसने क्या choose किया? To implement financial reform. They are not choosing like shock therapy and all. They are choosing implement financial reform. Okay, to maintain continuity and stability of India's financial industry, and this was required. This was required to reform, to adopt strategy for financial sector reform. Now, India incorporated international best practice at same time, adjust it as per local requirement. What are the local requirements? What are the requirements of people? What are the requirements of society? They are underwhelmed for that. Now, first generation of reform ensured flexibility to operate with a functional autonomy in order to develop an effective and lucrative financial sector. Second generation of reform was implemented to improve structural stability of financial system, and the last point was India embraced consensus-driven liberalization strategy because it was essential for democracy. Now, next point was what are the challenges and issues in financial reform. Now, this chapter is not very much big. Now, there is little bit some concepts which we have to study now, and this our new unit was finished. Okay. So now we have to study what are the challenges and issue in financial reform. So challenges include non-performing asset like NPA. अब मैंने एक बात बताई थी आपको पीछे कि what are the non-performing asset, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. Okay. So challenges include non-performing asset, recapitalization and increase in bank fraud, asset quality challenges and human resource problem that are hindering industry performance and endangering future economic growth. This will have effect on both bank and economy. Financial inclusion in India has following obstacles. What are the obstacles? What are the obstacles? It has low income and inability to offer collateral security, and second one was barrier to financial inclusion and is still scarcity of bank branches in rural area. Now, a greater reliance on unregulated lending.
देखो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट वाज लो इनकम एंड इनएबिलिटी टू ऑफर कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हाट आर द कोलेटरल सिक्योरिटी? कोलेटरल सिक्योरिटी रेफर्स टू एज सिक्योरिटी व्हिच इज गिवन in reference to our money or which amount we have taken from the बैंक। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कुछ 1 करोड़ का आपने बैंक से लोन लिया, तो आपको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी होगी, मतलब सेफ्टी के लिए कि अगर आप कल को भाग गए तो बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा। तो मान लो आपने अपना घर गिरवी रख दिया, जैसे कहते हैं ना मैंने गिरवी रखा हुआ है, तो जैसे घर गिरवी रख दिया तो वो आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आप दे रहे हो कि मान लो कल आपने अगर पैसे नहीं चुकाए तो बैंक आपके घर को बेच के या जो भी है वो उनसे अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा। This was the collateral security. Okay. Now, barrier to financial inclusion is still scarcity of bank branches in rural area. मतलब barrier क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले financial inclusion is still scarcity of bank branches in rural area. मतलब rural area में branches है ही नहीं, बहुत कम है, right? तो इसीलिए वहाँ पे RR भी खोले गए हैं, rural बैंक जो मैंने कल बताया था कि रूरल एरिया में जो खोले जाते हैं। नाउ ग्रेटर रिलायंस ऑन अनरेगुलेटेड लैंडिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे अनरेगुलेटेड लैंडिंग बहुत चलती है, तो इसी वजह से ये दिक्कत आती है। फिर कंप्लीटेड फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशन एंड सॉल्वेंट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। एसेसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स in India, in Indian banking, NPA expands to non-performing asset. Any advocacy or loan that is more than 90 days past due is considered non-performing asset in India, according to Reserve Bank of India. When an asset stops bringing in money for bank, it is said to be no longer performing. NPAs must be further divided into substandard, doubtful, and lost asset by banks. NPA refers to loans made by Indian bank and other active financial institutions that have interest payment and principal balances that have been past due for an extended period of time. Now, what are the previous methodologies for recovery? Now we are started to study these concepts, like what are the methodologies, and this was I think last topic. No, there is one topic left. Mostly 2 or 3 topics are left, and now then our new unit was finished. Okay, so new unit is finished. Okay, so in Indian banking process by which banks are and financial institutions recover outstanding debts that have been labeled as non-performing is known as NPA, non-performing assets recovery process. Loans are classified as NPAs when borrowers don't make timely principal or interest payment. Being a bank employee, I am aware of how challenging it is for bank to deal with scenario like this. There is an NPA account recovery technique that banks use for circumstances like these. To reduce non-performing asset, NPA in Indian banking, several measures can be implemented. The measures to reduce NPA are: banks should enhance their due diligence and credit appraisal process to access the borrower's credit worthiness effectively. Regular monitoring of loans account can help identify early sign of potential defaults. Banks should establish comprehensive risk management framework to identify, measure and mitigate credit risk. Banks should proactively initiate recovery measure and adopt efficient debt recovery mechanism. Promoting financial literacy initiative can help borrower make informed decision and manage their finances effectively. Now, banks should maintain high standard of corporate governance and transparency in their operation. And next point is regulators such as the Reserve Bank of India like RBI can play crucial role in monitoring and supervising banks' asset quality. So now next topic was debt recovery tribunal. Okay, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको सिर्फ रीड कर रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो ये मैंने बहुत ही ज्यादा ना अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है और बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। जो भी टफ लैंग्वेज होती है, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी मैंने बताया, तो जो चीज होती है ना जो मुझे बताने की होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ भी समझाने का मुझे नहीं लगता कि मैं आपको फिर से बताऊं, क्योंकि वही भाषा में जो मैं बताऊंगी हिंदी में वही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो सारी चीजें वही है, तो इसलिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ कि आपको पता चले मैंने लिखा क्या क्या है, ठीक है। बाकी अगर मैं सीधा नोट्स भी प्रोवाइड कर देती तो भी आप इसको आराम से पढ़ के कर लेते।
चलो अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी सुना होगा, टीआरटी कोर्ट होता है, ठीक है, एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, तो वो हम उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं।